Hello, bankers. So, very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to GIB CIB Prep. So, guys, from this particular session onwards, we are going to start our classes based on costing or cost accounting. Okay. So, in our previous two sessions, where we generally talk around these two, like the very first two unit of module D, which was all around taxation as well as GST. Okay. तो आज से हम लोग आपका बात करेंगे आपका यूनिट नंबर 31 विच इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू. देन वी हैव कॉस्टिंग मेथड्स, standard costing, marginal costing, budget and budgetary control. So these four session are very important one. ठीक है. सो आज का सेशन इज कंप्लीटली थियोटिकल. ठीक है. बट इसके बाद आपका कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, along with आपके concepts, you have to prepare some numericals also. ठीक है. And I'll come up with a dedicated session based on numericals which like you can expect from these particular session. Okay. But first we will build our basic concept or which we have already discussed through the concept video. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू भी हम लोग उसके ऊपर जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल गाइस. यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा. ठीक है. So GIB Prep, GIB CIB Prep official, and you can join and you can ask your questions. Okay. Now the very first unit, which is from the costing part. So overview of cost accounting and management accounting. ठीक है. So this is like cost, this particular topic 90% are driven by this cost accounting thing. What is cost accounting? What is the uses, advantages, benefit of cost accounting? ठीक है. And the comparison between cost and management accounting, cost and financial accounting, या जो आपके basic accounting standards होते हैं. ठीक है. So let's have a look. So cost accounting, the very first topic, management accounting, difference between cost and management accounting, relationship of cost, financial and management accounting with financial management, and that's it. ठीक है. तो ये तीन टॉपिक आपका, और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू. ठीक है. 1 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस और 1 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ठीक है. तो किस तरीके से क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए थे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका इससे बनते हैं, वो सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, और आपका इस तरीके से जो कंपैरिजन बेस, और 2 मार्क्स 1 सिंगल क्वेश्चन है. राइट. चलो, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन. Which of the following is not a primary objective of cost accounting? ठीक है. So primary objective of cost accounting. ठीक है. Which of the following is incorrect regarding the objective of cost accounting? ठीक है. Cost accounting के objective से related कौन सा statement गलत है? So now if you know the cost accounting, it is something related to determination or presentation of cost of any goods and services. ठीक है. Let's say whenever we come up with some product or services, we determine the cost. ठीक है. तो cost कैसे design होगा? For that sake, we have cost accounting standards as well. 24 standards are there. ठीक है. And it is a kind of accounting which is used for the internal purpose. ठीक है. तो cost accounting है वो use किया जाता है managers के द्वारा. And they use like whenever how you will disclose a product cost, so that is generally driven by that particular one. ठीक है. So कहीं ना कहीं आपका cost accounting में जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं. ठीक है. या फिर आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट. तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेंगी. सो डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज यूज और दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Enhancing financial reporting for external stakeholders, no. For external stakeholders we have financial accounting. जो accounting standards हमने पढ़े थे 29, या आपका 3 ऑप्शनल को ऐड कर देता है 20, 31. ठीक है. Reducing wastage of material and other sources, this is an objective. Providing decision making support for management. तो not पूछा गया था, तो क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. So enhancing financial reporting for external stakeholders is not an objective of cost accounting. Cost accounting is primarily used internally by management to analyze production cost, control expenses, and improve
efficiency. So these are some major objective like determining the cost of goods and services for pricing decision like आपका ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वेरिएंस कैलकुलेशन, तो जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. रिड्यूसिंग वेस्टेज बाय आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज, supporting managerial decision making. So managers, they generally based on the cost itself, right? Like we have a standard cost, and then based on that standard cost we decide the selling price, break even point, margin of safety. तो ये सारी चीजें आपका जो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका लिंक होती हैं, ठीक है. So these are some major objectives of your cost accounting as per Macmillan book itself. The main objective of cost accounting is to ascertain the cost of each product manufactured or services provided by an organization. This information enables the management to decide on issue like fixing the prices or assigning priorities to various product, cutting cost and maximizing the profit. This is kind of a objective or uses. We can summarize the objective like पहला, to record, analyze and classify the expenditure related to cost of production and services, to determine the cost of each unit, operation and process or department. For that we have different type of costing like unit costing, batch costing, contract costing, job costing and all. To compare the actual cost with a prevailing cost standards, or estimate for avoiding unnecessary wastage or losses of material and other sources. ठीक है, we have standard cost, we have actual cost, then we generally compare our standard cost with actual cost. That is generally known as variance analysis. ठीक है, तो जहां पे आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो अदर कॉस्ट है उनका कंपैरिजन. ठीक है, to provide necessary information to enable management to make specific or long-term decisions, long-term economic decisions. Okay, so these are certain some major like we can say uses of cost accounting, or the major objective which we generally try to achieve by using cost accounting. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next question guys, how does cost accounting assist management in strategic decision making? Strategic decision means these are the long term decision. ठीक है, we have three type of planning. Strategic planning usually for long term, then we have tactical planning, how we'll achieve those strategic plan, then the operational planning must lead to the day-to-day planning. ठीक है, तो strategic is something which is long term in nature by ensuring compliance with statutory financial regulation. नो, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है. बाय एनालाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर टू एलिमिनेट अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट and optimize production, it can be by providing mandatory financial statement for investor. For that we have financial accounting. By standardizing taxation policies, no. ठीक है, so what will be our answer? B will be right answer for this one. Cost accounting help management make strategic decision like evaluating a product profitability and deciding whether to continue or discontinue certain product, optimizing resource allocation to improve efficiency and reduce cost, providing cost benchmark to compare actual versus estimation, which is also known as आपका standard cost versus आपका standard cost versus आपका the actual cost. Okay, let's go through the next question. ठीक है, so अगर हम इस पे बात करते हैं, so advantages and scope of cost accounting. So deciding the price of product and services, decide on eliminating or reducing production of certain product and increasing the production of some others, reducing wastage of material and sources, inventory management, comparing actual cost with standard cost, develop strategies during recession or intense competition. If we have high competition in the markets, so to deal with that particular one, how your costing, your pricing strategy should be, वो सारी चीजें जहां पे आपका ये आपको हेल्प कर रहा होता है. ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe the scope of cost accounting in modern business environment? ठीक है, so scope of cost accounting in today's world. So cost accounting is limited to calculation of product cost for manufacturing industries. It is not limited to this particular one. We also make certain decisions are, or certain managerial decisions are based on the cost accounting as well.
Cost accounting extend beyond cost control to include planning, budgeting, and decision making for all business function. Yes, it can be the primary function of cost accounting is to comply with financial reporting. No, cost accounting only applicable to large scale industries. No, for every type of industry, it is kind of necessary, right? The scope of cost accounting is broad and apply to all type of businesses, including manufacturing, services, and trading. It include cost control, budgeting, variance analysis, profitability analysis, and strategic decision making, which we will study in the coming session. ठीक है, जैसे आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे बात भी करेंगे. ठीक है, जैसे if you talk about the cost control, so which is the suitable method for as per the business. Budgeting is also part of this. Variance analysis आपका, ठीक है, the difference between standard and actual. Then profitability, जिसके लिए हमारे पास है we have like cost volume profit analysis. ठीक है, so we have strategic decision, जैसे भी हमने आपका डिस्कस किया. ठीक है, which of the following is not an advantages of cost accounting? cost accounting का advantages नहीं है. It help in setting competitive pricing for a product and services. ठीक है, it help in setting competitive prices. Let's say I have given you so many examples in the concept class itself. Okay, let's say for this product our standard cost is 100 rupees. Then we, let's say we based on this, we our selling price we decided we will sell this particular product at 120 because our competitors are selling at 150. We want to penetrate the market. ठीक है, हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं. इसके अलावा सो व्हाट विल हैपन इफ कॉम्पिटिटर कम डाउन, तो 150 से कितना आएंगे, इफ दे कम टू 150 विल डू इट, सॉरी आपका 120 विल डू इट 115 एंड ऑल. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. हाँ, okay. So not an advantages of cost accounting. So this is an advantages. It ensures statutory compliance with tax regulation. No, it ये आपका गलत है. ठीक है, so this will be our right answer most probably. It identify inefficiencies in operation leading to better resource utilization. True, it is the uses of cost accounting. Provide management with relevant data for cost reduction and profitability improvement. ठीक है, तो जहां पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स, ब्रेक इवन नंबर्स और जो आपके अदर्स नंबर्स उनको डिसाइड करे होते हैं. सो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर. सो कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइमरीली फोकस ऑन इंटरनल डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड efficiency improvement. It help in price setting, identify inefficiencies and providing cost data for management to improve the profitability as well. Right, next one. Which of the following is the primary objective of cost accounting standards? ठीक है, so जैसे accounting standards हमने पढ़े थे in our unit 1 of module A. ठीक है, so similarly we have cost accounting standards also. We have 24 cost accounting standards. ठीक है, I hope you heard about one course called CMA. ठीक है, जैसे होता है ना, CA होता है आपका financial accounting के अंदर, वैसे ही for cost accounting we have one profile that is known as CMA. So that is generally driven by this particular through ये जो आपके standards हैं इनके around है. ठीक है, so which of the following primary objective of cost accounting standard issued by Cost Accounting Standard Board of India? ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे to prepare final accounts we have a set of guidelines. Similarly to prepare cost sheet, ठीक है, कोई कंपनी अगर आपका cost sheet prepare कर रही है, ठीक है, so how they'll prepare that particular one, for that sake also we have some set of standards. They are generally known as cost accounting standard. अब हमने ये क्यों किया, जैसे accounting standard क्यों किया था हमने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, like why we apply accounting standard का यूज किया था. ठीक है, जैसे कि let's say there are 3 companies, company A, B and C. They are preparing their final accounts like balance sheet, profit and loss account and cash flow statement.
So earlier, what was the issue? This company A was using X method, company B was using Y method and company C was using Z method. ठीक है, ये तीनों अलग अलग मेथड आपका यूज कर रहे थे. अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि कंपेयर इन तीनों में से बेस्ट कंपनी कौन सी है, आप बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे. क्यों? क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी सॉलिड कंपैरिजन अमंग दीज पर्टिकुलर वन. ठीक है, because each company they are preparing their books by using different method, okay, as per their comfort. Okay, so now what government did, they come up with accounting standard. उन्होंने बोला नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा. These are the accounting standard. Whenever you will prepare your accounts, you have to follow these particular standards only. ठीक है, अब company A, B, C, all three companies are preparing their final accounts as per these particular guidelines. So we have some sort of uniformity. Now we can easily compare these particular one as a stakeholder or as a user of that particular data. Similarly, for cost accounting standard also, ठीक है, तो हमने क्या किया आपका, we come up with some set of standards कि whenever you prepare your cost accounting things, so you should follow this particular one. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, it is necessary, ये आपका क्या है, by law important है, you cannot ignore these particular, but this is just for the मैनेजरियल पर्पस, आपका ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजेस के लिए. यू डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज देम विद सम अदर पार्टीज इन ऑल. तो इसलिए आपका इनका सिग्निफिकेंट उतना, मतलब इनका जो इंपॉर्टेंस है, बट दे हैव अ लिमिटेड स्कोप अप टू डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज. ठीक है, सो which of the following is primary objective of cost accounting standards? To regulate pricing policies for industries, to estimate uniformity and consistency in cost measurement and reporting. ठीक है, to enhance, to generally accept the accounting principles, no gap इसमें नहीं रहेगा, to provide mandatory financial accounting principle, no. ठीक है, so हमारा जो correct answer होगा, so cost accounting standard board was established by Institute of Cost Accounting of India, ICAI, to create uniformity in cost measurement, classification and assignment of cost across industries. Like GAP, which focus on financial accounting, cost accounting standard focus on measurement of managerial decision making and regulatory compliances as well, right? चलो, तो जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार आपका. The Institute of Cost Accounting, Cost Accountants of India, ठीक है. So Institute of Cost Accountants of India, recognizing the need of structured approach to measurement of cost in manufacturer or service sector, and to provide guidelines to the user, organization, government bodies, regulators, research agencies, and academic institution to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, and assignment of costs to a product and services, has constituted one body that is known as Cost Accounting Standard Board. ठीक है, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, with the objective of formulating the cost accounting standards. ठीक है, so the institute or board has so far 24 cost accounting standards. ठीक है, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल 100% क्लियर कर देता हूँ. You do not have to remember like what comes under cost accounting standard 1. Accounting standard you'll get in examination, like जैसे आपका accounting standard 1 disclosure of policies, accounting standard 2 inventory valuation, 3 आपका जैसे हमने डिस्कस किया था कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब वहां पे उनको याद करना है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए यूनिट 1 के अंदर. But you do not have to remember. Just remember this broader classification. That is more than sufficient. तो ये लिस्ट को याद करने की जरूरत आपको नहीं है. So 24 cost accounting standard, generally accepted cost accounting principle, 9 guiding notes आपका, ठीक है, 9 guiding notes, 2 guidance notes, like one is treatment of cost relating to corporate social responsibility and maintenance of cost accounting record for construction industry, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट. ठीक है, सो दिस इज अ टाइप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन पे आपका, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा. सो दिस इज द लिस्ट, बट दिस इज जस्ट फॉर एन लाइक आपका एक रेफरेंस पर्पस के लिए है. ठीक है, यू डू नॉट हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर सीरियसली. ठीक है, याद करने में नहीं लग जाना है. यू विल नेवर गेट एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन इन योर जेआईबी एग्जामिनेशन. ठीक है, जैसे आपका देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे हमने 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपका 9 गाइडिंग नोट्स, 2 अदर नोट्स की बात करी. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय कॉस्ट. ठीक है, जब आप एम्प्लॉय कॉस्ट शो करोगे तो कैसे उसको आप अकाउंट करोगे. यहाँ पे
या जैसे मटेरियल कॉस्ट आपका, ठीक है, इसके अलावा जैसे पैकिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये किस तरीके से आप इनको लेके चलोगे बुक्स में, या किस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन होगा, दैट जनरली गेट डिसाइडेड अंडर दिस पर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a benefit of implementing cost accounting standard in an organization? Ensure uniformity and consistency in cost measurement, enhancing cost transparency for managerial decision making, eliminating the need for financial audit, no. Providing standardized framework for cost allocation in a, तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? सी विल बी राइट आंसर। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, so cost accounting standards provide consistency in cost measurement, allocation and reporting, ensuring organization follows standardized cost structure. They enhance cost transparency, allowing managers to make informed decision. Cost accounting standard does not replace the आपका फिनेंशियल ऑडिट। फिनेंशियल ऑडिट किसके ऊपर होते हैं? जो हमारी फाइनल अकाउंट से फाइनल रिपोर्ट जो तैयार होती है उसके ऊपर। जैसे मैंने आपको ऑडिट्स इन बैंकिंग पढ़ाया था सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 और स्पेशल ऑडिट सेक्शन 30 सबसेक्शन ए बी आपका ऑफ BR Act 1949। ऑलराइट, चलो। So to provide better guidelines on standard costing accounting practices, to assist cost accountant in preparation of uniform cost statement, to provide guidelines to bring standard approach toward the maintenance of cost accounting records under various status, to assist management to follow the standard cost accounting practices in the matter of compliance with statutory obligations, to help Indian industry and government toward better costing management. So these are some areas which are generally part of this particular one. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। How do cost accounting standards benefit pricing and cost control organization? ठीक है, so in an organization, how cost accounting standard benefit pricing and cost control in an organization? ठीक है, by setting fixed price for all product, no. By ensuring fair and transparent cost allocation leading to accurate product pricing, yes. By replacing traditional costing methods such as marginal and all, no, ये आज भी है, ठीक है। By focusing only on this is the method which we use in this particular one, okay? By focusing only on reducing cost without considering the quality and efficiency. So what will be our right answer? This will be our right answer for this one, okay? So one of the major benefit of cost accounting standard is ensuring transparency in allocation of cost, which help organization price product accurately based on the actual cost. It does not set a fixed price, replace traditional this. By standardizing cost elements, cost accounting standard help businesses to maintain competitive pricing strategies while ensuring cost efficiency. All right, next one. Activity based costing, ठीक है। So activity based costing, which of the following is not considered a cost drivers? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज लाइक जितना आप एक्टिविटीज करोगे उसके हिसाब से कॉस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। इफ यू आर सर्विंग 1 पर्सन उसका, इफ यू आर सर्विंग 10% तो उसके हिसाब से अलग से, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ कॉस्ट कॉस्टिंग मेथड्स पे हम लोग आएंगे बहुत डिटेल में, सारे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। सो मशीन आवर्स क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जैसे मशीन आवर अगर आप कर रहे हो तो दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, सेल रेवेन्यू जनरेटेड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेटअप, ठीक है। Number of purchase order processed, sale revenue, हाँ, so this will be part of this, so C should be right answer for this sales। एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। So हाँ, sales revenue generated is not related to that। जैसे हम एक मशीन कितना आवर्स यूज किए हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर मीन्स हाउ मेनी ऑर्डर्स वी गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर, उतने प्रोडक्शन होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप, ठीक है, कितने बार हमने आपका प्रोडक्शन किया है। सेल्स रेवेन्यू समथिंग लाइक जहाँ पे इट कैन बी vary with the prices, discounts and others, the lot more factors are there, ठीक? So activity based costing assign overhead cost based on actual activity performed rather than a broad allocations method. Cost drivers are factors that cause changes in cost, जैसे machine hours से number of purchase over this and this, ठीक है। So sales revenue is not a cost driver, it is outcome rather than the factor influencing cost allocations. Next one. Which of the following statement about the cost accounting and management accounting is incorrect? ठीक है, तो cost आपका in management accounting के statement में कौन सा statement incorrect है? ठीक है, you can, this is highly expected question, ठीक है, from this particular unit. So cost accounting
आपका विच हैज अ नैरोअर like scope compared to your management accounting. ठीक है, management it has a broader scope. We do not have any set of rule for management accounting. ठीक है, basically management accounting they generally use cost accounting, financial accounting as a tool apart from other also ठीक है, interpretation in all ठीक है, ratios and all ठीक है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करने में हमें हेल्प कर रहा है ठीक है, एलोकेशन में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, जो मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है कि हाउ वी विल रन प्रोडक्ट, सेल्स कितना होना चाहिए एंड ऑल, सो दे आर यूजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अदर मॉडल टू मेक डिसीजन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, छोटा सा डिफरेंस. So cost accounting is primarily concerned with controlling production cost, while management accounting focus on decision making. बिल्कुल सही. हमें क्या ढूंढना था? Incorrect ढूंढना था. पहला statement correct है. Management accounting use only financial data, while cost accounting use both financial and non-financial. This is wrong. ठीक है, ये opposite होना चाहिए था. ठीक है, cost accounting use आपका costing से related और आपका management accounting which generally use financial accounting as well as cost accounting. Cost accounting include method like standard costing, marginal costing, lean costing. बिल्कुल सही. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो अ फिक्स स्ट्रक्चर लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यहाँ पे कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं. ठीक है, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, so management accounting incorporate both financial and non-financial data like production efficiency, employee performance, metrics and all for decision making. Cost accounting which focus on cost related things. Okay, आगे बढ़ते हैं. So this is the one very important one guys. तो एक बार पढ़ते हैं. So differences between cost accounting and management accounting. ठीक है, one question for 2 marks और one question for 1 marks at least based on this. ठीक है, जो अभी हमने जैसे प्रैक्टिस किया उसी सेट में, तो प्लीज पे योर अटेंशन. सो द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वाइडर कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, क्योंकि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन ले रहा है एंड यू आर टेकिंग डिसीजन अबाउट अ cost of a goods or service. ठीक है, while the cost accounting relate more to the ascertainments, allocation and accounting aspect of cost, management accounting related to impact and effect aspect of cost. ठीक है, किस तरीके से अगर हम if we'll have break even point of, let's say if we are keeping standard cost 100, so this will be our price 120. ठीक है, अब उसका यूज आपका कि if we will have this particular one, so how like what break even numbers we have to achieve, what will be our margin of safety, market shares, so that is get decided under the planning. आपका management costing. ठीक है, cost accounting is mainly about short term planning while the management is mostly with the short term and long term. ठीक है, तो जिस तरीके से आपका रहेगा cost accounting data provide a base for applying the methods of management accounting to make data more purposeful for management decision. तो cost accounting का data is get used by the management accounting. Management accounting make use of additional tool and techniques available to it compared to those available to cost accounting. For example, the tool like standard costing, break-even analysis, marginal costing, etc. are used in cost accounting. Additional tool like ratio analysis, cash flow and fund flow statement, और आपका the current positioning, they are generally used by the management. Both financial accounting as well as cost accounting are included in management accounting. ठीक है, जो accounting standard है वो भी और ये भी आपका उनको यूज करेगा. Cost accounting depend mostly on historical cost. ठीक है, ये आपका cost accounting क्या है? Historical जो हमारे past experiences है while we deciding the standard cost. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिस टेंड टू बी फ्यूचरिस्टिक, कि आने वाले समय में क्या होगा, कितने सेल्स नंबर्स होंगे, हाउ वी विल अचीव दोस पर्टिकुलर वन बेस्ड ऑन द डेटास व्हिच वी जनरली पिक फ्रॉम आवर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा इसको सब लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a key difference between cost accounting and financial accounting? चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. ठीक है, कॉस्ट अब यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल. फाइनेंशियल इज इक्वल टू योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े थे विच इंक्लूड आपका जैसे रिपोर्टिंग वाले जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कैसे बनेंगे अदर्स. ठीक है, सो दे आर मैंडेटरी इन नेचर. ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर, स्टेक होल्डर्स दे यूज दिस वन. एक्सटर्नल यूज या आपका इंटरनल यूज. ठीक है, they have broader aspect compared to आपका cost accounting. ठीक है, so cost accounting is mandatory for all businesses. No, आपका financial accounting is mandatory for all businesses. Cost accounting focus on internal decision making while financial
Accounting primarily for external reporting, true. Cost accounting follow gap, no. आपका that follow gap, ठीक है. Financial accounting primarily deal with cost control, no. ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? So this will be right answer for this one. ठीक है, cost accounting is used for internal management decision making, helping business control cost, set prices or improve efficiency. Financial accounting is primarily for external stakeholders such as investors, regulatory bodies and tax authorities, ensuring statutory compliances are met. ठीक है, so that is next one. So हाँ, अब ये भी हमारे लिए उतना ही important है जितना हमारे लिए पिछला वाला था comparison. ठीक है, so another comparison. So financial accounting take care of statutory requirement like Companies Act and Income Tax Act, but cost accounting is generally voluntary except that for some manufacturing industries, it is now obligatory to keep records as per the Companies Act. The purpose of cost accounting is mainly to meet requirement of management, while the financial accounting aim at providing suitable information to various stakeholders like investors or the owners, creditors, tax authorities and all. Financial accounting is concerned with uh, revealing the profit and loss. तो finance आपका financial accounts में हम क्या आते हैं? We prepare profit and loss account, we prepare balance sheet, we prepare cash flow statements. So they generally shows these particular areas. और cost accounting जहाँ पे आपका which concerned with the unit cost and profitability. Under the financial accounting, the statement are normally presented और prepared quarterly basis. ठीक है, financial में आपका जिनको हम क्या बोलते हैं, interim reports आपका बोलते हैं. ठीक है, हाफ ईयरली एंड और एनुअली. बस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है. इट कैन बी ऑन डेली बेसिस और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन covered under the financial accounting are external transaction. Cost accounting, it is internal transaction. Financial accounting deal with the actual figures and not estimate. Cost accounting somewhere we have estimates also. जैसे हम लोग कहते हैं budgetary control, आपका standard cost, actual cost, so they come under this one. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अगेन प्लीज, तो ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, दो, वो कौन से हैं? एक पिछला वाला स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन, दूसरा आपका ये. ठीक है, सो हाउ डज कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन टर्म ऑफ रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी? अभी हमने डिस्कस किया था. इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग it is like we have to prepare interim reports as well as final reports. ठीक है, interim is condense and balance sheet, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो. ठीक है, समरी जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, और फिर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही पूरे फाइनेंशियल ईयर का. बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज समथिंग कि आप मतलब इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट. ये डेली बेसिस पे, वीकली या मंथली या ईयरली कभी भी हो सकता है. ठीक है, so cost accounting report are generally annually, while the financial accounting contribute report decision making. Financial accounting report are prepared as needed by management. Cost accounting report are prepared frequently for this, whereas financial accounting report are typically generated on quarterly or annually basis. ठीक है, so C will be right answer for this particular question. ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था अभी, आपके जो पिछला स्लाइड था उसी में से क्वेश्चन लिया गया. A manufacturer company is considering discontinuing a product due to high cost. Which of the cost accounting technique should be used to assess the impact of this decision? तो हम क्या यूज करेंगे? We will use marginal costing. ठीक है, so marginal costing है इसमें, yes है. ठीक है, so marginal costing will help you out in this particular one. तो marginal costing basically हमें क्या बताता है? Let's say if you are producing 10 lakh unit as of now, if we produce one additional unit, ठीक है, तो इसका आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो क्या होगा? इफ वी प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट्स, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर कॉस्ट का बर्डन क्या होगा और कितना प्रॉफिट वो देखे जाएगा. ठीक है, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इफ यू आर रिड्यूसिंग, आल्सो यू कैन यूज दिस वन. मार्जिनल कॉस्ट इज यूज्ड टू एनालाइज इंपैक्ट ऑफ discontinuing a product by considering variable cost. Fixed cost remain unchanged in this short term and all. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, दिस इज अभी मार्जिनल कॉस्ट, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट और आपका अदर टाइप ऑफ कॉस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन, विच इज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग मेथड्स. उसके बाद डेडिकेटेड सेशन है, 2 सेशन. वन इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अनदर वन इज बेस्ड ऑन आपका मार्जिनल कॉस्टिंग. ऑलराइट, so this is it guys. So this is my telegram group, so you can join this particular one for any further queries and all. And I hope you guys are enjoying this particular session. तो कैसे लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू आपका लिख के. एंड इफ यू हैव सम suggestions or if you have some queries, please do let me know in the comment section, or else you can connect me on telegram group. All right,
So आज के लिए इतना ही करते हैं. I'll see you tomorrow at same time, and we will discuss one another topic from your module D. So this week we are having a target कि like in next 3 to 4 days we will complete the module D. Then I'll start with IE and IAFS. Okay. So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Thank you for joining this session. And if you like, please do like and share with your friends also. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care all, and all the very best for your preparation, guys. Thank you.